Am I audible? Am I audible? Hello and welcome back to the stream. तो आज इस खुशी के मौके पे आई एम लाइव क्योंकि education minister has resigned, and me being a student I should have come and celebrate it, play chess with you, and talk about his resignation letter. क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई रेजिग्नेशन लेटर पढ़ेगा उनका ऐसे अकेले में, क्योंकि इट्स इन हिंदी एंड हिंदी सब छोड़ चुके होते हैं. Also, nobody is interested in letter, everybody is interested in conclusion. ओके तो वेट, आई जस्ट ओपन द लेटर. ठीक है, एक सेकेंड रुको. चेस आज हम बाद में खेलेंगे क्योंकि चेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वी विल फर्स्ट रीड द लेटर. वेट, दिस इज़ द लेटर. वेट, तुम्हें अभी खुला नहीं होगा. जो लोग दोपहर को सो के उठ रहे हैं उनके लिए तो ओके. ये नहीं हाइड करते. डोंट मिस व्हाट्स हैपनिंग. ओके, so I'll be reading this, of course. ठीक है, आवाज़ आ रही है अच्छे से. ओके, वेट. I think screen is visible. If I zoom it, okay, I'll zoom it. Just wait.
Okay, now it is perfect. This is the letter for his resignation. Let's read it together. मेरे युवा साथी. Okay. He says, मेरे युवा साथियों, that's how he began. My young friends, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर साम सांप्रति रहा. यार my English is not, sorry, my Hindi is not perfect. सांप्रित रहा हूँ. ओके, ठीक है. मतलब ये पिछले 4 दशकों इस डिकेड्स ये 4 वेट दशकों इस डिकेड ये 4 डिकेड थे. एजुकेशन मिनिस्टर, वेट ये 4 डिकेड से थे ना. Yes, he was education minister from 4 decades, which is too much, man. And yes, he has been dedicated. मेरा सदैव ये just wait, okay. एक सेकंड में मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ.
ओके सो आई एम बैक विद अ लेटर ऑफ कोर्स. ठीक है, और मैंने इसकी जीपीटी ट्रांसलेशन मांग ली है. Now we will read it. Wait. My young friends. Okay, he says, मेरे युवा साथियों, my young friends, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए रहा हूँ, समर्पित रहा हूँ. So he has been here for 4 decades, which is too much. 4 decades is like too much. ठीक है, too much for people league, it is too much. And then he says, I have always believed that a strong, inclusive and compassionate education system is a foundation of a strong nation. Strong is not. Education system is not strong. So he believed, but he didn't made it. Inclusive, compassionate, no. It is neither strong, it is neither compassionate. Right. मैं देश के युवाओं की आशंकाओं, भावनाओं और उनकी I'm not able to read I'm not able to pronounce it. Okay, anyways, I deeply respect the aspiration, emotions and the legitimate expectations of the youth of the country. Okay, you respect it and you don't deliver it then. But it's okay. We are just reading and not judging, okay? We are just reading and not judging. भारत के युवा पीढ़ियाँ, एक सेकेंड जूम कर लेते हैं. Fulfilling the dreams of the India's younger generation has been moral commitment for all of us in public and political life. Definitely political life में तो कभी नहीं इन्होंने focus करा होगा that education should be the top priority. But it's okay, we will just appreciate him क्योंकि at least he resigned. I express my gratitude to Honorable Prime Minister for giving me opportunity to serve the nation under his visionary leadership, okay? However, in the view of the irregularities that came to light in NEET UG examination held on 3 May, the Government of India acted immediately and handled the investigation over to CBI and cancelled the examination. Why are they always focusing on the government handle immediately? And they never say on the first place it should not have happened. They're like, they handled it immediately. Why would you wait for something bad to happen and then handle it? You should actually have some prior settings so that it should not happen. And they always like bring this up. It happened and then we take an active step on it. You took an active step on it, but it's not worth it after it had happened. क्योंकि तुमने री-एग्जामिनेशन कराया तो डिस्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लीक से तो डिस्ट्रेस बढ़ ही गया कि यार लीक हो गया पेपर. बट तुमने जब री-एग्जामिनेशन कराया तो डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया कि भाई बच्चे जो बंद करके बैठ गए हैं किताबें, उनको फिर से खोलनी पड़ रही है. जिनका अच्छा हुआ वो बेचारे परेशान हो चुके हैं. तो वाई डू दे वेट कि हाँ. The government of India acted immediately, which is the bare minimum. They always put our expectations कि हाँ bare minimum हम कर देंगे और फिर हम उसको ही 10 साल तक सुनाएंगे. A fresh date for re-examination was subsequently announced. Okay, वो तो करनी थी यार, मतलब of course. It was also decided that the beginning next year the examination will be conducted in computer-based mode. Okay, hopefully उसमें इनकी कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि आई थिंक इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस भी बहुत तरीके हैं चीटिंग करने के, और आई थिंक बहुत एप्ट तरीके से चीटिंग करी जा सकती है. क्योंकि जब पेपर में होते एग्जामिनेशंस तो आपको लाइक
हाँ पहले से पढ़ के जाना है, बट कंप्यूटर बेस्ड में तो लाइक ऑन लाइव चीटिंग हो सकती है, राइट? ओके, during this period our foremost priority was to ensure the smooth conduct of examination for more than 2 million students. ओके, हर बार जो प्रॉब्लम होती है वही इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है. To achieve this, the whole of government approach was adopted. Alongside the government of India, state governments, especially district administration, played a crucial role. With the cooperation of student guardians and parents, the examination was successfully conducted on 21st June 2026. From the first day I assumed responsibility, I never turned away from this situation. If from the first day you have assumed a responsibility and you have never turned away, so you should actually, you can, whatever you're doing, tweet or whatever response you're putting, you can put it on the respective days जब इंडिया की जनता आवाज़ उठा रही है, तो आप तब करो ना रिस्पॉन्स दो, ताकि सब सेटल डाउन रहे और मतलब आप बोलो कि हाँ मैं कुछ आई एम टेकिंग एक्शन ऑफ इट. कोई एक्शन ना लेते, बस री एग्जामिनेशन करा देते और कोई भी एक्शन लेने की नहीं ज़रूरत. ये कंप्यूटर बेस्ड भी कहते हैं, फिर बाद में कर देते, वापस पेपर पे रख रहे हैं, फिर उसमें चीटिंग, ये वो. इट्स जस्ट बिकॉज लोगों ने प्रोटेस्ट करा, ठीक है. आई वॉज डिटरमाइंड दैट no deserving student's future would be jeopardized because of examination mafias, nor would we allow any student to face injustice. One thing more I have to highlight here is कि जब से ये आया है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे बच्चे कि लीक हो गया और ऐसा ऐसा हो गया, तो एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है वो ये होता है कि ये सिर्फ यही हाईलाइट करे जा रहे हैं कि हमने री एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, हमने अपने हिसाब से ये कर दिया. द प्रॉब्लम दे आर नॉट हाईलाइटिंग इज़ कि ये जो प्रॉब्लम है ऑफ दिस नीट एग्जामिनेशन लीक, ये बहुत टॉपिकल प्रॉब्लम है. इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रॉब्लमेटिक है. तो मतलब लोग इसलिए नहीं सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे कि आपका एग्जामिनेशन लीक हो गया है, ये सिर्फ एक टॉपिकल चीज़ है जिसने लोगों के मन में आग लगाई है. बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली में बदलनी चाहिए एंड दे आर नॉट हाईलाइटिंग इट. इनको लग रहा है कि सिर्फ नीट का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बट दे आर नॉट हाईलाइटिंग कि बाद में भी बहुत चीज़ें हैं जो इन्हें ठीक करनी चाहिए. Now would be allowed to face the NEET UG results were announced on 16 July were satisfactory. Many talented students from economically disadvantaged backgrounds also achieved success. This line is just to show कि हाँ भाई equal treatment हुआ है, क्योंकि economically disadvantaged backgrounds means of course the people who don't have a lot of money, तो of course वो पेपर तो नहीं खरीद सकते हैं, तो they have also achieved success. That means it was a fair result. मतलब दिस इज़ सो लो कि हमें आज ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि एवरीथिंग वेंट वेल और सब छात्रों को सफलता मिली. एनीवेज, परंतु इवन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिएट certain individual occupying position of responsibility attempted to mislead students and create what? However, during this period, certain individual occupying position of attempted to mislead students and create obstacles. तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि that people who had responsibility, they misled students कि अभी भी cheating हुई है और ऐसा कुछ. This caused me into deep anguish. So sorry that it caused you in deep anguish. But एक second रुको तुम.
Okay, I'm back. Wait, let me open the screen. ठीक है पढ़े. I have I have always had unwavering faith in the strength of a democracy, okay? And I always held the aspiration, dreams, and legitimate expectations of our youth in highest regard. I don't think it is true. They are not only future of India. Actually बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है. हमसे पैराग्राफ भी लिखवाते थे स्कूल में बहुत ज़्यादा कि राइट अ लेटर वाई इज ब्रेन ड्रेन हैपनिंग एंड स्टफ. But come on, brain drain is the future of India. If all these people will, do stuff like this. So, future of India is brain drain if you do this. Okay, they are not only future of India but also torch bearers, builders, and architect of a new developed nation. Okay, the events of past 10 days, it was not just 10 days, it was 26 days, sir. Is such a nice number. Has deeply saddened me. 26 days का जो past है deeply saddened हुआ, but he came on the very edge of when all this stuff was just crossing the levels. एक second. This is not a personal prestige for me, okay? The youth of India are the true strength of this nation. Yeah, he's saying such beautiful and such positive words. How can he be bad? It is my resolve that youth of this country should never fall victim to confusion or misinformation. The situation that has unfolded at Jantar Mantar and across, finally he addressed the main thing. This situation across the country, no anti-national forces should be allowed to exploit this situation. The unity of our nation must remain intact. Not a single student's future become entangled in legal complexities. Our students should devote their time to their studies and focus on building their careers. With these considerations in my mind, I have submitted my resignation to Honorable Prime Minister. I am happy. So he's saying with all these stuff, with all this thing in mind, I have submitted my resignation because so he basically accepts his thing that he was not up to the mark, so yes, resigned. I also extend my sincere thanks to esteemed colleagues in Council of Ministers as well as, and to everyone whom I had privilege working. I offer my heart forever. Serving the nation is highest priority of my life, and I shall remain steadfastly dedicated to that mission with the blessings of Lord Jagannath. Okay, nice. I had to criticize थोड़ा बहुत क्योंकि of course, but ठीक है यार, लेटर दे दिया यार, अब लेटर में यही लिखना पड़ेगा. I will continue to dedicate myself in every possible way to fulfilling the aspirations of Mother India, the people of Odisha, and the youth of our nation. Yours sincerely, Dharmendra Pradhan. It's okay that he has to sugarcoat some stuff क्योंकि that's how you write letter. You all know हम कैसे letter लिखते थे. This is how you write a letter. Okay, I think that's very important.
तो इस लेटर का क्या कंक्लूजन निकलता है? इस लेटर का ये वेट, लेट मी आस्क जीपीटी ना, हाउ मच would you rate this letter out of 10? 8.5 to 9. क्योंकि it opens by reaffirming commitment to education democracy, ends in a positive way, accepts the political responsibility, maintains a measured tone. Weakness पढ़ लेते हैं. Limited personal accountability. The letter discusses the government actions and exam reforms but does not explicitly say, as a minister, I take a responsibility. Yes, that is what I'm saying. He does not actually says ki yes, I take a responsibility, and that's how you sugarcoat letters, and that is also important for political leaders. But okay, but yeah, some readers might find it less convincing, of course, क्योंकि of course यार, defensive in places, yes, he's very defensive. People in a responsible position misleading the student and anti-national forces can come across the shifting focus from the central issue. Yes, right. Beyond CBT and exam, it does not outline the broader plan to restore confidence. That is what I was saying कि भाई सिर्फ ये रीनीट और नीट पे बात कर रहे हैं, but they are not actually highlighting what exactly education system must look like, और बाकी सारी चीज़ें जो इनकी problematic है for education, they are not highlighting it. तो दैट इज़ द प्रॉब्लमैटिक थिंग कि यू शुड हाईलाइट कि हाँ भाई ये गलती है, ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है. मतलब सिर्फ ये बोल देने से कि हाँ भाई नीट का हमने एकदम करा दिया जैसे लीक हुआ, इट डजंट मेक इट स्ट्रॉन्ग. पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, नोबडी इन हिज पीयर लीडर्स वोंट क्वेश्चन हिम कि हाँ कुछ गलत तो नहीं है, बट वैसे अच्छा नहीं है. एक सेकेंड, हम जीपीटी से ही इसके बारे में बातें करेंगे. ओके, व्हाट डू यू थिंक, what improvement is needed? Accept the responsibility more direct. Okay, yes, true. I said the same thing कि he is not actually accepting it कि हाँ भाई मेरा था ये and I did it. I didn't did it, but it was my not mistake also, it was my responsibility and I think I should have been a better, but ये तो कोई भी नहीं कहेगा. Show greater empathy of students. Yes, he has also not shown कि anxiety, uncertainty, they are just focusing on कि नीट होना चाहिए था और वो नहीं हुआ तो नहीं, वो हुआ तो it's all good. Explain why resignation is necessary. Avoiding sounding defensive. Mention lessons learned. Reduce praise for Prime Minister. This is so controversial, okay? No, he can praise Prime Minister. Thanking the Prime Minister is appropriate. Maintaining his leadership multiple times can be letter feel much less personal and more political. Of course, letter will be political, sir. End on reconciliation. The ending could be more unifying. I request the student to remain hopeful, continue their studies with confidence and trust. It was 8.5. तो दिक्कतें तो बहुत बता दी हैं जीपीटी ने. Mention lessons learned. Only AI can fix it. Avoiding sounding defensive. बहुत ज़्यादा दिक्कतें बताई है. But it's okay, I think. It was overall, मतलब क्या ही कह सकते हैं अब.
एट द एंड रिज़ाइन तो हो गया ना यार। एक तो ना मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल आती, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। वेट, बट लेटर how can I respond? If you genuinely agree with the letter but want to offer constructive criticism, it's a well written and measured resignation letter. I am PM. Okay, if I am PM, that's how I would respond according to GPT. I've received your resignation and accept it. I accept it. I appreciate your years of dedicated public service and your contribution to strengthening India's education sector. Throughout your tenure, you worked with commitment. ठीक है, the irregularities, ठीक है, the government remains fully committed. So this is like a response which is like neutral. It does not say that your resignation letter does not make sense. It just says it's okay, right? It just says that I accept it. You can resign happily. Now let's just check out कि क्या चल रहा है. एक बार मैं सर्च करती हूँ. So everywhere it is Dharmendra Pradhan resigns. लेटर कोई नहीं समझा रहा क्या? हम तो लेटर डिस्कस कर रहे हैं ना. अच्छा, डी न्यूज़ वाले समझा रहे हैं. at this hour. First, खबर है things of all the various aspects of सुनाई दे रही है. दिस इज द चुप, एक तो ट्यून व्यून आ जाती है यहाँ पे. वेट, जेपी नड्डा जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह. न्यूज़ नहीं यार, मेरे को एक्चुअली में ना किसी का व्यू पॉइंट देखना है. एक सेकंड रुको. चाय वाला लॉन्चर एंड फाइनल बॉल. जंतर मंतर राइट नाउ. जंतर मंतर राइट नाउ.
although, as Anshul was reporting, the organizers are कि किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है, हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड जो यहाँ पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट दिए। वैष्णवी ने trickling in, people coming and go. आपको बता दो धर्मेंद्र प्रधान हम आज तक का देख लेते हैं यार। की बड़ी खबर आपको बता दो धर्मेंद्र प्रधान ने ये इतनी ज़्यादा कि आपको बता रहे मतलब इतना जो मांग यहाँ पर छात्रों की तरफ से की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो लोकसभा में गूंज रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो राज्यसभा में गूंज रहा था धर्मेंद्र प्रधान जो ये हो रहा था, जो वो हो रहा था, शिक्षा- he will not directly give you news. आज तक will never give you news directly. आज तक will be like जो ये हो रहा था, जो वो हो रहा था। खबर आपको बता दें, सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अभिजीत दीपके के साथ साथ जो इस देश के जो छात्र हैं, वो छात्र मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र चलो ठीक है, फाइन यार, नाइस। आई थिंक आई डिड माई पार्ट। हेमा जी का कि उन्होंने बहुत बहुत चिमारू के नए वीडियो। एक सेकेंड, चलो ठीक है यार, एंड करते हैं लाइव। चेस खेलेंगे शायद रात को। It's already been 45 minutes or something. And we have also decoded his letter in English. तो मज़ा आया। We'll play chess maybe. And that's it for the video यार. Bye bye.